Hello everyone, in today's video I will teach you 10 useful daily English sentences. These sentences are very easy and you can use them in your everyday conversations. Let's get started. In as video madase honorary the shan sentence the sentence which is useful our daily life mother sentence which asan honorary zinare 14 conversation mother use kariba. Number 1 mother hodde It's for your own good. ये तुम्हारे ही फायदे के लिए है. यंदा से तुम्हारा फायदा ला. यंदा होते इंग्लिश में होते It's for your own good. Number 2 में होते You did that on purpose. तुमने ये जानबूझ कर किया. तुमने ऐसे यान बुझे सिंधी कुछ जते. यंदा होते इंग्लिश में You did that on purpose. नंबर 3 में होता है Are you waiting for me? क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो? तुम यार इंतज़ार करो तो नहीं. यहाँ रहे होते Are you waiting for me? नंबर 4 में होता है Don't overthink it. उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो. यहाँ पे होते हैं माने बिसी ना बच्चों चिंता ना उज्जो. ये रहे होते हैं Don't overthink it. नंबर 5 में होता है He hung up on me. उसने मेरा फोन काट दिया. इतना आसार मोबाइल हार दिए. ये रहा होता है He hung up on me. नंबर 6 में होता है Do you hear me? Do you hear me? क्या तुम मेरा बात सुन रही हो? तुम यार खाता फोन होने. तुम यहाँ होती हूँ होने. ये रहा होता है Do you hear me? नंबर 7 में होता है Don't speak ill of others. दूसरों की बुराई मत करो. आज़ार बुराई ना बुझो. मेरा होता है Don't speak ill of others. नंबर 8 में होता है This is his fault. ये उसकी गलती है. ये अंदर से है तार बुल. ये तार गलती. नंबर 9 में होता है I was never like that. मैं कभी ऐसा नहीं था. I होनोते निलनवाशिलम. I होनोते निलनवाशिलम. मेरा होता है I was never like that. नंबर 10 में होता है She made me cry. उसने मुझे रुला दिया. ये वेदा सारे हादा बाई. अनकन हतातुन दुखपन जरिया हादा बादी बार होता है She made me cry. ये यार हादा बाई. इंग्लिश आरतुन इंग्लिश में हम लेकर होयम She made me cry. या तो He made me cry. They made me cry. इतना आरा हादा बाई. ये यार हादा बाई. इतना आरा हादा बाई. इंग्लिश आरा अंदर यूज़ करें जो संदेशर होए जो अंदर करें. That's all for today. Practice these sentences daily, and step by step, your English will become more fluent and confident. See you in